Hello viewers, welcome to this channel. Today we will discuss about the solvency ratio. In my previous lecture, we discussed about the financial analysis, what is financial analysis, and about the theoretical part of the ratio analysis. My name is Ashok Sen Gupta and I belongs to School of Management Sciences, Lucknow, working as an assistant professor there. So, let us start. This is about the solvency ratio. The term solvency refers to the ability to concern to meet its long term obligation. Companies nightmare, because most of the companies taken debt on huge amount of debt from financial institutions as a working capital, as a capital formation or extension of the business, but they are not able to do so because of the lower profit generation. And at the end of the some year, they have to sell out their unit for the payment of the debtors, and this is a very bad situation for companies. In newspaper you can read the different newses about the payment of debt by selling the units because of lack of financial position or lack of liquidity. With the help of solvency ratio, we can able to find out the company's long term obligation, how it able to meet it or not. The long term indebtedness of a firm includes debenture holders, financial institutions providing medium and long term loans, other creditors selling goods and on installment basis. Long term solvency ratio indicates a firm's ability to meet the fixed interest as cost and repayment schedule associated with the long term borrowing. Solvency ratios indicate that how much company able to meet its repayment of the debt. There are various type of solvency ratios, and here I will discuss with you one by one with formula and also the numerical example. The first is most important, it is debt equity ratio. It is debt equity ratio, debt equity ratio. The formula of the debt equity ratio is outside fund divided by shareholder fund. All we know that shareholders fund are internal fund and outside funds are like loan. It can be debentures. You can also find this ratio in form of external equity divided by internal equity, or long term debt divided by shareholder fund. There are three formulas: outside fund divided by shareholder fund, external equity divided by internal equity, long term debt divided by shareholder fund. There are three formulas of debt equity ratio. And how we can solve the question? This is a question. Question is, preference share capital is given 1,50,000, equity share capital 5,50,000, capital reserve 2 lakhs, profit and loss account having 1 lakh, 6% debentures, sundry creditors, bill payable, provision of taxation and outstanding creditors. This is some data given here. From this data we can find out the debt equity ratio. Now, here we can see
There are some data are from the balance sheet like this, 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 this. This is also, and yes, all data are from the balance sheet. So, this is the data available from the balance sheet, and this from this data we can find out the debt equity ratio. See, debt equity equal to external equity divided by internal equity. External equities are outsiders. From them we borrow something like debentures, sundry creditors, bill payable, provision of tax, outstanding creditors. They are the outsiders. From them we borrow something or we have to pay something like provision for tax. So, you just add 2,50,000, 1,20,000, 60,000, 90,000, 80,000, we get 6 lakhs. And our internal equities, internal means our owners, equity shareholders are the owners, preference shareholders are the owners, okay, like this and this. Capital reserve is also part of the internal because it companies make it reserve for the future use, and profit or loss is part of the company's income. Add this one, this is 10 lakhs. So, when we use this like 6 lakhs divided by 10 lakhs, we can find out by this 2 3 is 6, 2 5 is 10, ratio is 3:5, ratio is 3:5. That means, the ratio between the external and internal is 3:5. So, company's debt equity position is 3:5. अगर 3 डेप्ट हैं तो 5 इक्विटी है, तो घबराने की बात ज़्यादा नहीं है. बहुत ज़्यादा डेप्ट होता, अगर उल्टा होता 5:3, दैट इट्स क्वाइट रिस्की कि हमारे डेप्ट बहुत ज़्यादा है और इंटरनल कम है. यहाँ पे मॉडरेट वेट है. इफ यू यूज द सेकंड इक्वेशन, अनदर इक्वेशन लाइक लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड. Long term debt is 2,50,000 and total shareholder value is 10 lakh. This one, our value is 2.5, 0.25, 0.25. This is the value by using debt, total long term debt divided by shareholder funds, and we interpreted that 25%. If we make it in percentage, we can interpret 25% of overall fund, shareholder fund is from the debt. This is the interpretation. 25% debt से है. By using third equation, long term debt divided by long term fund, we find out here 0.2%, 0.2%, like divided by 0.2 or multiply by 100, it can be 20%. It can be 20%. So, he can also interpret that out of total long term fund, our long term debt is 20%. So, this is the interpretation of equity ratio. Second is proprietary ratio.
The ratio is also known as equity ratio or shareholders to total equity ratio or net worth to total asset ratio. In different book you can find different formulas. Formula is shareholder funds divided by total assets, and assets are include here tangible assets, non-tangible assets, current assets including goodwill. Here we are going to find out what is the percentage of shareholder fund out of total assets, proprietary fund, because shareholder are the owners. तो टोटल एसेट्स में से उनका कितना भाग है हम इसमें से निकाल सकते हैं. इफ द हाइएस्ट द रेशियो इंडिकेट सेफर टू द क्रेडिटर, जितना ज़्यादा रेशियो अच्छा हायर होगा क्रेडिटर के लिए उतना ही अच्छा होगा. क्रेडिटर जो हमें लोन देते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, वो हमें लोन दे पाएंगे. लेस देन 5 इट्स अलार्मिंग सिचुएशन. लेस देन 5 इज अलार्मिंग सिचुएशन. दैट मीन्स कि शेयर होल्डर्स फंड के छोड़कर आप जो एसेट्स हैं वो किसी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के थ्रू आए हैं, और इससे क्या होता है कि पैसा जो है हमारा एसेट का पैसा जो है पहले वो लेके जाएंगे शेयर होल्डर, उसको बाद में ले पाएंगे. अगर लिक्विडिटी की पोजीशन आती है, सॉल्वेंसी की पोजीशन आती है, हमारी एसेट्स को बेचा जाता है तो शेयर होल्डर या को सबसे बाद में मिलता है. ऑल इफ यू नो शेयर होल्डर सबसे बाद में मिलता है, खासकर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे बाद में मिलता है. डिवेंचर होल्डर्स बैंक को पहले मिलता है. तो अगर परसेंटेज कम होता है इसका तो क्रेडिटर्स डरेगा कि अगर कंपनी सॉल्वेंट हो गई, सॉल्वेंसी हो गई, इसका हो गया तो क्या होगा. ओके, so this is a question, and this question we find that there is a preference share of 2 lakhs, equity shares, capital, debenture, creditor, bill payable, land, goodwill, investment. So just do the question. This is the asset side. This is our asset side, and shareholder fund is preference shares, equity shares, capital and reserves. So this is about to 7 lakhs, 2 lakhs, 4 lakh, 50 lakh, 50,000, 50,000, 7 lakhs. And what is the figure of the assets? 2 plus 2 4 plus 1 5 equals 8. So question is 7 divided by 8, 7 lakh divided by 8 lakhs. 0 replaced by 0, 7 divided by 8, it is equals to near about 87%, 87.5%, yeah, or 8.75. So this is a good situation where out of 8, 7 lakhs is belongs to the shareholders. It justify the ratio and interpreted that the company's position is good, company solvency ratio position is good, or proprietary ratio is good. Next is capital gearing ratio. This ratio also known as leverage ratio. This is one of the solvency ratio. The ratio indicates the relationship with fixed interest and equity shareholders fund. Leverage is a tool which we used to increase the shareholders fund by using fixed interest. Up we know that with the help of a small bar we can move a big stone. It is known as leverage. In physics it is known as leverage. Similarly, we can
increase the financial position or increase the earning per share of the shareholder by using interest, fixed interest. And capital gearing ratio indicates the relationship between fixed interest and shareholders fund. To whom we can pay the fixed interest? Debenture holders, preference shareholders and long term debts. A high capital gain ratio indicate a company is having large fund bearing interest, fixed interest and fixed dividend as compared to the equity share. A low capital gain ratio represent preference share capital, other fixed interest bearing ratio loan are less than share capital. अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है एंड कंपेयर टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट वाले जो कैपिटल हैं उनसे इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है, अदरवाइज कम है. तो इससे इक्विटी शेयर वालों को हेल्प मिलता है कि उनकी जिन्होंने इक्विटी शेयर ले रखा है उनको हेल्प मिलता है कि वो कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी में डिवेंचर वाले भी हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले भी हैं, तो उनका परसेंटेज क्या है, कैसे अपने आप को बचाएं, कितना हालत है कंपनी की, इक्विटी के साथ अगर डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर भी ले रखा है तो. दिस इज द क्वेश्चन. प्रेफरेंस शेयर 5 lakhs, प्रेफरेंस शेयर 5 lakhs, equity share 6 lakhs, reserve capital, profit and loss, debenture and sundry loans. So, by using the formula we find out the equity share capital. equity share capital में क्या आएगा, 6 lakhs ये आएगा, 3 lakhs capital का आएंगे और profit का 1 lakh आएगा, टोटल 10 लाख आएगा. ये तीनों आएंगे equity share capital में, क्योंकि these are part of the equity share capital. Remaining debentures, this one secured loan 4 lakhs and preference share capital 9 lakhs are part of the fixed interest bearing funds. They are part of the fixed interest bearing fund. इन फंड्स को पे इंटरेस्ट पे करना होता है और इंटरेस्ट जब पे होता है प्रॉफिट से जाता है. जब प्रॉफिट से इंटरेस्ट जाएगा तो अर्निंग पर शेयर कम होगा, ये भी तो है. तो नाउ वी फाइंड आउट ratio is 10:9. It is very low, near about point डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0.1 ऐसे हो जाएगा. दैट मीन्स कि 10 में से 9 भाग जो है बिलोंग्स टू दी फिक्स्ड इंटरेस्ट कैपिटल गियरिंग फंड. 10 में से 9 भाग फिक्स्ड इंटरेस्ट कैपिटल फंड से रिलेट कर रहा है. सो व्हेन कंपनी पे दी फिक्स्ड इंटरेस्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, इट मे डिक्रीज द अर्निंग पर शेयर और शेयर होल्डर्स वैल्यू, और इट मे डिक्रीज द डिविडेंड पे आउट. इज डिपेंड ऑन द कंपनीज टू कंपनी. So, let discuss these things here. Solvency ratios having 3 main sub ratios. One is debt equity ratio, another one is capital gearing ratio, and third one is proprietary ratios. There are lots of ratios, some one more, but they are not so important, but these 3 are very important. So, debt equity ratios gives us an idea what is the ratio between the internal equity and external equity. We discussed with the help of numerical, and again I give you a brief idea because it is very important for the decision making. Solvency ratio is a very important ratio for the decision making thing for the financial analyst. Debt equity ratio is outside fund and shareholders fund. Outside fund are
the fund from which are not belongs to the companies, they borrow it from somewhere else. And shareholder funds like equity shareholder and preference shareholder, reserve, capital reserve and profit. शेयर का पार्ट नहीं होता आउटसाइड फंड, आप समझिए। आउटसाइड फंड का मतलब होता है शेयर से छोड़कर, शेयर हम लेते हैं लोगों से, मतलब इशू करते हैं शेयर्स को, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और उससे फंड हम जनरेट करते हैं कंपनी में। पर इसके अलावा जो भी हम फंड जनरेट करते हैं वो आउटसाइड होता है। डिवेंचर एक आउटसाइडर होता है, बैंक लोन एक आउटसाइडर होता है। तो आउटसाइड फंड और इनसाइड फंड में क्या रेशियो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो एक ऐसा टूल है जो कि सॉल्वेंसी रेशियो को पूरा बता देता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो हेल्प्स टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द कंपनी, it helps to take the decision about the investment to the investors, it helps to take decision to the creditor, either it want to give credit to the company or not, क्योंकि we all know that when at the time of payout or at the time of liquidity, first we have to pay the outsiders, So, लिक्विडिटी अगर होती है कंपनी की, सारी चीज़ें एसेट्स को लिक्विड किया जाता है, बेचा जाता है पेमेंट देने के लिए, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा टू आउटसाइडर्स। उसमें आएगा बैंक एंड डिवेंचर्स वाले, डिवेंचर होल्डर्स। देन ये फर्स्ट हो गया, देन प्रेफरेंस शेयर, एंड एट लास्ट रेसिड्यूअल अगर बचता है तो इक्विटी शेयर। एंड नाउ डेज most of the companies issue equity shareholders, so it is very important for the equity shareholders to find out and calculate the debt equity ratio. These ratios are easily available in the balance sheet or the annual report of the company. You can also Google it from the net before the investment. So you can get an idea how much company borrow from outside. With this numerical, I already told you how we calculate the things, but practically we need to understand that debentures, shareholders, bank are outsiders. Similarly, in the case of proprietary ratio, proprietor, मालिक, अब टोटल कैपिटल कंपनी में जो आता है, उस कंपनी से जो कैपिटल आया, फंड आया बाहर से, वो फंड फ्लो एसेट में कितना हुआ। अब ये फंड यहाँ लिखते हैं हम लोग, फंड फ्लो। अब फंड फ्लो शेयर से आया, पैसा आया शेयर से और वो एसेट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हम कंपनी उससे एसेट्स ले रही है, एसेट में कन्वर्ट कर रही है। एसेट्स कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, इवन करंट एसेट्स ऑल्सो लाइक कैश। यहाँ पर कंपनी ने शेयर वैल्यू ली और शेयर होल्डर का पैसा आया और शेयर होल्डर के पैसे से उन्होंने बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश सब लिया, ये फंड फ्लो हुआ इस तरफ। दूसरा फंड आया किससे? आउटसाइडर से, लोन लिया बैंक से। अब बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद भी हम लोगों ने ये फंड फ्लो किया और पैसे को कन्वर्ट किया और उससे
ज़मीन ली, बिल्डिंग में ऐड किया. नाउ क्वेश्चन इज दैट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट company have to pay the interest of the loan to the bank. If company fail to do that, then first they have to sell their asset. आप पेपर्स न्यूज़पेपर में आता होगा, देखते होंगे न्यूज़पेपर में बैंक्स जब इंसॉल्वेंसी घोषित करती है किसी को पेमेंट, तो न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना लोन था, क्या नाम था, क्या कौन सी जगह है, और वहाँ पर नीलामी जिसे बोलते हैं. मूवीज़ में आपने कब देखा होगा कि मूवीज़ में भी होता है, नीलामी होती है, बोली लगती है और थर्ड पार्टीज उसको बेचती हैं. और सबसे पहले एसेट्स को बेचा जाता है उनको जिसके बेस पे मॉर्गेज रखा गया. अब लोन बिना मॉर्गेज के रखा नहीं जाएगा. अब लोन अगर लिया है तो आपने कुछ लैंड मॉर्गेज रखा होगा, मॉर्गेज. अब लैंड को आपने मॉर्गेज रखा है तो लोन को पेमेंट करने के लिए लैंड को आपको सेल करना पड़ेगा. इफ कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, बिल्डिंग रखी है, बिल्डिंग को भी करना पड़ेगा, फर्नीचर भी करना पड़ेगा, कैश है तो कैश देना पड़ेगा. सो विद द हेल्प ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो वी कैन फाइंड आउट कि टोटल एसेट में शेयर होल्डर का पार्ट कितना है भाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपने हिस्सा चाहते हैं. ओके, शेयर होल्डर अपना हिस्सा चाहते हैं, तो उनको कितना, उनका कितना रेशियो है, कितना पार्ट है. दिस इज़ अ न्यूमेरिकल. मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कराया कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आप कैसे आप पता कर सकते हैं क्या इनका इम्पैक्ट होता है. थर्ड एंड लास्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो. फिर मैं बता रहा हूँ कि इट लीवरेज रेशियो नोट भी कहते हैं, इसको लीवरेज भी कहते हैं, यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना निकल के जा रहा है. कैपिटल तो आपने कर लिया, कैपिटल आपका हमारा कहाँ से होता है, शेयर से होता है कैपिटल, लोन से भी हमें कैपिटल ही आता है. फिर कैपिटल फॉर्मेशन हमारा शेयर से भी होता है, लोन से भी होता है, प्रेफरेंस शेयर से भी होता है, डिवेंचर से भी होता है. ये सारे पार्ट ऑफ द कैपिटल होते हैं, पूंजी जिसे बोलते हैं हम लोग. इस पूंजी में से फिक्स्ड इंटरेस्ट किसको पे करना है, इस पूंजी में से किसको पे करना है वो हमें देखना होता है. इसके लिए हम कैपिटल गियरिंग रेशियो करते हैं. और यहाँ पे हम देखते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना पे करना है, इक्विटी शेयर वालों को कितना है. ये दिस इज अ न्यूमेरिकल. So friends, this is the end of this topic, and I hope through this topic you will be able to understand about the various component and the various type of solvency ratio and why we can use the solvency ratio for the financial decision making in ratio analysis or as a tool of the ratio analysis. Thank you.